कुछ फैक्ट्स की बातें आपको बताता हूँ। ओह वाओ, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। ओह माय गुडनेस, ये जो शिप है क्वीन एलिजाबेथ टू, ये टाइटैनिक से बड़ा है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नए दिन के साथ नई शुरुआत। एक बार बाहर का नज़ारा देखें। तो बस यार अभी तैयार होते हैं और फिर जाएंगे वो टूर के लिए जो आपको मैंने कल बताया था। तो आपको फिर तैयार होकर मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग हो गए रेडी। तो अभी जा रहे हैं, टूर स्टार्ट होने वाला है हमारा। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो चुके हैं, तो अभी टूर स्टार्ट होने वाला है। तो फिर आपको इस साथ साथ दिखाते हैं कि कैसा है ये शिप और क्या इसकी हिस्ट्री है। चलें। Well, ladies and gents, we are going to find out about this and so much more. The history of the QE2 begins right here in this lobby, and everything that you see here was used when she was in active service. The books that we see coming from the largest library at sea, a collection of over 6,000 books. Some of them are over 50 years old. The furniture that we see coming from the Queen's Room, the largest ballroom at sea. The beautiful artwork and the paintings, these are priceless. Pictures from the bottom of the hill all the way to the top of the funnel, and that's 2 meters at the beam. Ladies and gents, built at a total cost of 29.6 million pounds, or an equivalent of 460 million pounds today. She is a true marvel of engineering. ये शिप की लॉबी और यहाँ बैठना है अपने को। Growing up as an entrepreneurial man, he was encouraged by the growing railway network in England, and therefore he decided to start a transatlantic fleet of ocean liners that will cross the ocean. So in 1836, he traveled to the United Kingdom, where he sought investors from Liverpool. So they later on formed what was to become the Cunard Line. We have the old New York skyline, and ladies and gents, we do notice the Concorde. This became the fastest supersonic jet. In fact, these two British giants came together, where you could sail to the United States on the fastest ocean liner and return to the United Kingdom on board the fastest supersonic jet, sold together as the Cunard Concorde package. These two giants passed their ways in 2003, an end of luxury. This was a place of opulence and utmost luxury. This used to be a luxury boutique store for jewelry. So on board, every evening when dinner time came, it was another event. Gentlemen, regardless what cabin you had, you'll be dressed in a suit. Ladies, for you, as usual, sophisticated and extravagant, an evening gown. So the gentlemen will lead their ladies, adorn them in their jewelry, in their earrings, necklaces, before going out to dinner for another dinner of caviar, foie gras, and boeuf bourguignon. Ladies and gents, in 1987, this became the first Harrods at sea and the first Harrods afloat. यार ये सीढ़ियाँ जो है ना शिप की, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं मुझे। पूरी टाइटैनिक की याद आ रही है मुझे। So the British government and Cunard came together, and they decided in 1902 to build two vessels which had a service speed of no less than 24 knots. This was to once again seal British supremacy on the Atlantic. So the British government gave Cunard bonds of 2.6 million pounds, and they built two vessels, the Lusitania and the Mauritania. And ladies and gents, in front of us we have the original model, 17 feet long. This is the original portrait. This is the original model, built in 1904. She is perfect to scale and is insured on board for 3.6 million pounds. And ladies and gents, this is how ships were built in that time.
Most people tend to confuse this ship with another famous ship at the time, the Titanic, especially because of the 4 funnel layout. Yes. However, the Titanic belonged to another shipping line that was known as the White Star Line. But in 1934, Cunard came together with the British government and they bought out the shares of White Star, and therefore it became known as the Cunard White Star Line. And in front of us we have an original portrait. This is believed to be the biggest portrait of the princess afloat, and this was done by Edward Halliday. This is Princess Elizabeth when she was 21 years old, before she got married to Prince Philip. Ladies and gents, it looks absolutely magnificent. I do encourage you after the tour to come and take more selfies with the princess. And ladies and gents, you can actually see where the Titanic sank over 100 years ago. If you follow your eye across to the top, all the way to 50 degrees, come down that line of longitude, just beneath the Grand Banks of Newfoundland, you're going to see a white star, 2926. And this is around the area that the Titanic would sink over 100 years ago. तो यार गाइस वो उस पॉइंट पे टाइटैनिक डूबा था, वही बता रहे हैं कि ये अटलांटिक ओशंस का रूट था और उस पॉइंट पे थोड़ा सा टाइटैनिक डूब गया था। एंड उसके बाद ये थोड़ा सा साउदर्न रूट बनाया था इसके लिए, क्वीन एलिजाबेथ के लिए। So the route would begin in Southampton to New York, going down to South America, going around the world, the Far East, Australia, traveling to Africa, and back to England. Yes, ladies and gents, welcome to the Queen's Room. This was a multi-purpose ballroom and the biggest ballroom at sea until 2004 when the Queen Mary II took over the record. So this was a multi-purpose space. In the morning we'll start with yoga, dances and workout classes. Moving on during the day, afternoon tea was served, and in fact over 2,500 tea bags were used daily on board the QE2. In the evenings, reception parties, the captain's cocktail parties, and after dinner it was the scene for ballroom dancing. So on this stage there were lectures. If you had booked the Cunard Concorde packages, it meant that your pilots were coming with you, and on board they will give lectures about the power of their machines and how they will whiz you back to the United Kingdom in 3.5 hours. So we can still see the continuation of fiberglass and all the way into the ceiling. So currently this is a public space that we rent out to the public. Numerous weddings have taken place. Most recently we had the Queen's Platinum Jubilee variety show taking place in this space. However, in 1972 when the ship's shops were brought to the upper level, the staircase was removed and 2 carving staircases were created here in the stage. These were all together removed in 1994 because of the disruptions during performances. So on top we had the shops like Marks and Spencer, Louis Vuitton, Cartier, Dior, and a private art gallery. So it was known as the Royal Shopping Promenade. So this is another space that is rented out to the public for functions and even corporate events. We do host shows on board. So to find out what's coming up next, you can log on to www.thetheatrebyqe2.com. Ladies and gents, welcome to the Golden Lion Pub. We do advertise this as the oldest pub in Dubai. It was done in 1994 as a thank you to the people who believed in the mission of Cunard. It's strictly 21, but it opens at 12, so we all have access. So I want you to have a good look around. You do notice that we have over 150 plaques. So on the maiden voyage of the Britannia ship in 1840, when the vessel reached in Boston, the people of Boston gifted Sir Samuel Cunard with a commemorative cup. And this started a tradition where when a ship calls in port for the first time, there is a maiden port of call gift exchange. And all of these were gifted to the vessel when the ship reached a port for the first time. So, ladies and gents, there are rumors that gambling could be coming to Dubai in around 2027, and we've been informed that these machines are in good working order.
and we only need to plug in the motors, and then we are ready to lose more money again. Once again. You're going to notice that some of the artwork has been done by world-renowned artists like Picasso and Salvador Dali. Oh wow. ये है ना यस टूर की सबसे बढ़िया जगह। ये बड़ी टाइम से मेरा मन था देखने का, द ब्रिज। So ladies and gents, follow me as we make our way towards the bridge. I do encourage you to have a good look down below. It is believed that when the vessel was launched in 1964, over 250,000 people at the banks of the Scotland. Down below we can see a simulation of the same. People waving goodbye to their loved ones as they were making the maiden voyage. Do follow me as we make our way towards the bridge. ओके, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और थोड़ा और भी एक बेहतर व्यू मिलेगा अपने को। वाओ, अमेजिंग यार। ओह माय गुडनेस, यही देखने का मन था मेरा। और वो पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट देख के मुझे टाइटैनिक याद आ रहा है। टाइटैनिक का मोस्ट फेमस सीन। भाई अब तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, This is an island. Shows the logs for April 2008. तो भाई ये डायरी है, इनके जो भी सेफ्टी चेक्स एंड ऑल दी साइन करते थे। And what will come to you is the old vintage smell. I do encourage you to go around and have a look at the equipment, and we'll talk about it in a while. तो भाई ये है जहाँ से शिप ऑपरेट होता था। और यार सामने व्यू देखो यार, चेक करो। द हेलम, the radar, all the meters. और ये कुछ चाबियाँ, इम्पोर्टेंट चाबियाँ। हम देखते होते थे ना यार फिल्मों में, इस शीशे को तोड़ के निकालते होते चाबियाँ कहीं कभी। Moving on to the safety side. No, sorry. We have the fire doors and the watertight doors. On board the QE2's 39-year seagoing career, there was a fire drill on board each and every week. So the safety of the passengers was a priority, and this will illuminate in the event of a fire drill or an actual fire. And similarly, the watertight doors will illuminate. Do follow me a bit further. And we move on to the telecommunications hub. We have the Navtex, or short for navigational telex, used for capturing navigational alerts. Next to that, we have the Global Maritime Distress and Safety System. This will be used when there was a seagoing emergency career. So there is a button that will be pressed, and it will send signals to surrounding authorities. So ladies and gents, a couple of photo opportunities, and then we'll make our way out. ये है स्टीयरिंग व्हील जहाँ से चलती है शिप। यहाँ से देखो फ्रंट पे, और इससे भी आप रिफ्लेक्टर से भी देख सकते हो। ज़बरदस्त है यार।
मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत बड़ा व्हील होगा और ऐसे छोटा सा व्हील है एंड इट्स गुड। वो जो बता रहे थे ना कि एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे स्टीयरिंग व्हील है, तो ये भी है वो स्टीयरिंग व्हील एक साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड वाला स्टीयरिंग व्हील है। तो यहाँ से भी आप ओपन से बाहर देख के कंट्रोल कर सकते हो शिप को, शिप की स्पीड एंड शिप को फास्ट करना सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये है भाई, एक बार पूरा व्यू देख लो शिप का, ज़बरदस्त है। और अभी हम अंदर जाएंगे यहाँ से। वाह, तो ये था भाई सारा ओवरऑल टूर शिप का, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने फर्स्ट टाइम कोई शिप देखी ऐसे, मतलब इतनी डिटेल में, और इतना बड़ा क्रूज़ तो ऑब्वियसली पहली बार ही देख रहा हूँ। मे बी आप लोगों ने देखा होगा, बट दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही बढ़िया लगा और मज़ा आ गया यार। इतना बड़ा शिप है और इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी, टाइटैनिक से भी लिंक्ड है और क्वीन एलिज़ाबेथ के भी डायरेक्ट लिंक है। तो बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त हिस्ट्री है इनकी, और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप था ये अपने टाइम का। अभी तो खैर नहीं है, अभी तो बहुत सारे और भी आगे होंगे। तो वो देखते हैं और क्या है ट्रिप पे। वाह, So this used to hang by the theatre balcony, but it was moved here to sit next to the Queen's Grill. So the Queen's Grill was the only first-class restaurant on board. It was a 6-month waiting period to have admission to this restaurant. You can imagine having dinner with the likes of Elton John, David Bowie, and even the Queen herself. So there was a strict dress code on board inside the restaurant. Gentlemen were only allowed in suits and ladies in evening gowns. So no shorts were allowed, no tank tops. So I do encourage you to have a good look down on the A staircase. No thumbs. Whoa, that one's further. You. ये भी ज़बरदस्त है यार। तो वो यार जो फर्स्ट क्लास लॉन्च की बात कर रहे हैं वो इस तरफ है, जिसकी बोल रहे हैं कि 6-6 महीने तक वेटिंग होती थी इसमें जाने के लिए। ये है वो लॉन्च, अभी तो खैर बंद है भाई। अभी आपको ऊपर से व्यू दिखाया था, अभी नीचे से दिखा रहे हैं। Ladies and gents, follow me as we make our way towards the walkway. You're going to see the name of QE2 appearing in multiple newspapers. I do encourage you to come back and have a good read of the stories behind the QE2. Yeah. I saw the one about the rescue where they rescued 300 people in a Yes. French ship. Yes, a friendship. Yeah. What is this? So have a good look inside. Oh, I will that's explain. sonar. Oh, it's like all right. So we do have an original tourist class cabin, left as it was in 1969. So this will go for around 86 to 120 pounds. So have a good look. We do have the old school technology, the bubble screen televisions and the old Samsonite luggages. Oh my goodness, look at the hair dryer. भाई इस रूम की प्राइस थी 4000 पाउंड्स। मान सकते हो 36 मिनट में पूरी टिकट्स फिल हो गई थी इसकी, भर चुकी थी। इतना क्रेज़ था उस टाइम पे शिप्स का। ओह वाओ, दिस इज समथिंग अमेजिंग, द विंटेज रोल्स रॉयस। Ladies and gents, it's always a great privilege and honor to have people with us on board. Unfortunately, this is where we come to the end of our tour. We do hope you enjoyed your time with us. तो टाइम आ गया दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ 2 को बाय बाय कहने का, बट हम ज़रूर जल्दी आएंगे मिलने दोबारा। तो ये जो देख रहे हो ना आप, इसका एक ओरिजिनल प्रोपेलर निकाल के बाहर रखा हुआ है भाई, देख सकते हो कितना ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है भाई।
कुछ फैक्ट्स की बातें आपको बताता हूँ। ये जो शिप है क्वीन एलिजाबेथ 2, ये टाइटैनिक से बड़ा है एंड टाइटैनिक से फास्ट चलने वाला शिप था। जो टाइटैनिक की टॉप स्पीड थी वो थी 23 नॉट्स एंड इसकी है 34 नॉट्स। तो ये उससे बड़ा भी है और उससे फास्टेस्ट भी है। तो बेसिकली ये भी सेम ही रूट पे चलते थे पहले एंड अटलांटिक ओशन में। तो जहाँ पे टाइटैनिक डूबा था उस रूट से थोड़ा सा हल्का सा साउदर्न की तरफ इनको शिफ्ट कर दिया था बाद में, क्योंकि वो रूट थोड़ा सेफ़ नहीं माना जाता था। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा साउदर्न में शिफ्ट किया, लेकिन रूट सेम ही था इनका। टाइटैनिक भी उसी रूट पे जाता था, ये भी उसी रूट पे जाता था। तो देख सकते हैं यार, पीछे इस तरफ है, बोर्डिंग करनी है तो इस तरफ। और मैडम लगी है अपनी सेल्फी खींचने। तो ये है रोल्स रॉयस और एक्चुअली अगर आप इससे एक फ्लोर डाउन जाओगे तो इनके पास पूरी पार्किंग है। तो जब ये शिप सेल करती थी एंड व्हेन पीपल हु यूज्ड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास, वो अपनी सारी कार्स के साथ ट्रैवल कर सकते थे। दे डू नॉट नीड टू गो आउट एंड हेड फॉर अ टैक्सी। तो यार ये ना लिफ्ट है पूरी, तो ये मतलब आप देख सकते हो कि पूरा नीचे तक जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो इट्स अमेजिंग यार, मतलब पूरी फर्स्ट क्लास वाली फील है एंड ज़बरदस्त है। पूरा शिप देख लिया हमने, बहुत मज़ा आया एंड आई एम लविंग इट। तो बीच बीच में मुझे टाइटैनिक याद आ रही थी कि हाँ यार, यहाँ से वो लोग भागते थे, यहाँ पे जाते थे, ये डेक है, ये फ्रंट है और ये अपना लॉकर रूम है, एवरीथिंग मतलब नेक्स्ट लेवल था, बहुत ही बढ़िया था। मैं तो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप ज़रूर आएँ, दिस इज़ अ मस्ट वॉच अगर आपको शिप का एक्सपीरियंस लेना है तो बस ठीक है। फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।